Now today in this session, we will be discussing about the accounting treatment related with the accumulated profit, losses and all types of reserves at the time of the change in the profit sharing ratio. जब पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेंगे तो उस समय in the old balance sheet we have got some figures like all types of reserves. हमारे पास reserves होते हैं to meet the contingencies. We have got general reserve, there is no such specification, but we have also got some special reserves. So all types of reserves are being created out of profit only. Profit में से ही हम इन reserves को बनाते हैं. So when there is a change in the agreement and at that point of time the reconstitution takes place and the old books of accounts comes to an end, पुरानी बुक्स बंद होती हैं और उस दिन से नई बुक्स चालू होंगी. So all the amounts which are being created out of the profits are to be credited to partners capital account. So how the accounting treatment will take place? इसका treatment किस तरीके से होगा? So there are reserves like general reserve, workmen compensation reserve and investment fluctuation reserve. Okay. So we have to distribute all these amounts among the partner in their old profit sharing ratio. अगर फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, किसी भी रीजन से हो रहा है, here we are talking about change in profit sharing ratio. So at that point of time, the amount which are there in the old balance sheet of all the types of reserves are to be credited to partners capital or current account depending on the nature of the capital. So how this treatment will take place? So when we are talking about the treatment, there are few criteria which we are supposed to follow. The first thing, the criteria that when we are transferring the amount of any reserve, let's say workmen compensation reserve, okay, for example, if there is any claim against that reserve, अगर उस रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम है तो वी हैव टू एडजस्ट दैट क्लेम आल्सो. और इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट दैट रिजर्व, और मान लीजिए वो रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं आता है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज फॉर द प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्कर्स व्हाइल डूइंग द वर्क. इफ समथिंग हैपेंस टू द वर्कर, सो दैट रिजर्व इज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर कंपनसेटिंग देम. अगर काम करते समय वर्कर्स को कोई तकलीफ होती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो रिजर्व्स जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अमाउंट है, हम उन वर्कर्स को कंपनसेट करने में यूज करेंगे. पर अगर कोई क्लेम नहीं आया कि इफ देयर इज नो सच क्लेम एट द टाइम ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन, देन व्हाट विल हैपन? एंड इफ देयर इज क्लेम, देन व्हाट विल हैपन? हाउ द ट्रीटमेंट विल बी डन? आई हैव ड्राफ्टेड फ्यू थिंग्स फॉर यू, because this treatment will be done with the help of the journal entries. So I have drafted the journal entries related with the basic concept and then the concept of workmen compensation reserve. So first we will understand this thing, how the journal entries will be made. Okay. For transfer of reserves and accumulated profit on the date of reconstitution, there are some reserves in your books. आपकी बुक्स में, पुरानी बुक्स में कुछ रिजर्व्स हैं एंड देयर इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आल्सो, और आपका कुछ प्रॉफिट का शेयर जो आपने रिजर्व करके रखा है वो भी है. सो व्हाट विल हैपन व्हेन द एग्रीमेंट इज चेंजिंग ऑन दैट डे? ऑल द रिजर्व्स एंड ऑल द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट एनी रिजर्व, किसी रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं आ रहा है, so every amount will be credited to partners capital account. So it will be all types of reserves account debit. जितने भी रिजर्व अकाउंट है, let's say general reserve, workmen compensation reserve and investment fluctuation reserve. इन्वेस्टमेंट में क्लेम नहीं आता है, इन्वेस्टमेंट वैल्यूज कम और ज्यादा होती है, उसके हिसाब से उसकी एंट्री आती है. Okay. So all types of reserves, there are three: general reserve, workmen compensation reserve, investment fluctuation reserve. All will be debited if you are having in your books of account. Profit and loss account credit balance. Profit
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है आपके पास, तो दैट विल आल्सो बी डेबिटेड इन द जनरल एंट्री। एंड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, जितने भी पार्टनर्स हैं, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, लेट्स से देयर आर टू पार्टनर A and B, so it will be to A's capital oblique current account and to B's capital oblique current account. You have to write in this manner. This is the basic entry. Okay, so this entry will be passed when you will be transferring the amount of reserves when there is no claim. Claim will come only against the workman compensation reserve. प्रॉफिट है तो ऐसे वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सिमिलरली इफ देयर इज अ लॉस और अ डिफर्ड एक्सपेंसेस, अगर आपकी बुक्स में लॉस चल रहा है और डिफर्ड एक्सपेंसेस हैं, तो व्हाट विल हैपन, all partners capital oblique current account will be debited because loss and deferred expenses are to be debited towards the partner. So all partners capital oblique current account debit to profit and loss account, that is the debit balance of the profit and loss account if it is there, and to deferred revenue expenditure account if it is there. So all this amount will be distributed or shared by the partner in their old profit sharing ratio. ये जितने भी अमाउंट हैं ये पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या तो क्रेडिट किए जाएंगे या लॉसेस होंगे और एक्सपेंसेस होंगे तो डेबिट किए जाएंगे। So this is a simple condition when we are saying that there is no claim against any reserve. Now what happens if there is a claim? अब मान लीजिए क्लेम आ जाता है, किसी वर्कर को कुछ हानि हो जाती है, if there is an accident taking place while doing the work, so that worker has to be compensated, उसको आपको compensation मान लीजिए देना है, and you have created the workman compensation reserve for that, आपने उसके लिए रिजर्व बना रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आउट ऑफ द प्रॉफिट ओनली। जो भी आपका ईयरली प्रॉफिट होता है आप उस प्रॉफिट में से यू कैन ट्रांसफर सम अमाउंट या सम पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट इन द वेरियस टाइप्स ऑफ रिजर्व अकाउंट। सो यू हैव क्रिएटेड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड नाउ इट इज सेड दैट देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट दैट रिजर्व। क्लेम आया कंपनी के ऊपर, फर्म के ऊपर क्लेम आया, तो फर्म के ऊपर जब क्लेम आया, सो हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ दैट क्लेम? लेट्स से इफ दैट अमाउंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिजर्व, जितना रिजर्व आपके पास है, लेट्स से यू हैव गॉट अ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 10,000 रुपीस, आपके पास 10,000 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, और जो क्लेम आया है वर्कर्स के द्वारा दैट इज आल्सो ऑफ 10,000 रुपीस, so that is equal. So now there will be no loss occurred by the firm. फर्म को अब इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो लायबिलिटी क्रिएट हुई है फर्म की अगेंस्ट दैट क्लेम, इट विल बी मेट आउट बाय द रिजर्व व्हिच यू हैव क्रिएटेड। अब वो उस रिजर्व से आप मीट आउट कर देंगे। सो नाउ आफ्टर मीटिंग आउट दैट लायबिलिटी यू विल नॉट हैव एनी अमाउंट लेफ्ट इन योर रिजर्व अकाउंट। क्यों? क्योंकि आपका रिजर्व का अमाउंट और क्लेम का अमाउंट बराबर है। सो हाउ दिस विल बी ट्रीटेड? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट के टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। प्रोविजन इज योर लायबिलिटी, क्लेम आएगा आपके ऊपर, क्लेम का प्रोविजन है, सो यू आर लायबल टू पे दैट अमाउंट, सो इट इंक्रीजेस योर लायबिलिटी। तो बेसिक रूल फॉलो होता है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में होती है, एंड ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व्स यू हैव टू डेबिट, जो हमने यहाँ पे फर्स्ट एंट्री में बताया। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹10,000 एंड प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 10,000, क्योंकि सेम अमाउंट था। अब आपके पास कुछ नहीं बचा, तो इन द न्यू बैलेंस शीट देयर विल बी नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फॉर यू नाउ, नहीं होगा, and neither you will be able to distribute this amount to the partner, और नहीं आप ये अमाउंट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। सेकंड थिंग, when claim is less than reserve, अब ये भी सिचुएशन होती है कि when claim is less than the amount of reserve, there is a claim, वर्कर्स ने क्लेम किया है अमाउंट,
there is a compensation claim की liability create हुई है, but that amount is less than reserve. Let's say reserve हमारे पास 10,000 है, but the liability on WCR was only 8,000 rupees. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की लायबिलिटी आई, वर्कर्स को कुछ नुकसान हुआ और उस नुकसान की जो लायबिलिटी बनी, कंपनसेशन बना, वो 8,000 रुपए बना. सो देयर वाज अ क्लेम ऑफ 8,000. सो 10,000 रुपी इज योर रिजर्व विच शुड बी डेबिटेड. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000. देन to provision for workman compensation claim account, claim was of 8,000, तो 8,000 की ये liability के रूप में claim credit हो गया. So 10,000 में से 8,000 माइनस हो गए आपके, but still you have got 2,000 rupees in your reserve account on the date of change in agreement. अभी भी आपके पास 2,000 रुपए बचते हैं, तो उसके लिए वो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि it should be distributed to the partners. Okay, so to all partners capital of the current account. तो remaining जो 2,000 rupees हैं, वो अब जितने भी पार्टनर्स हैं उनके ओल्ड शेयरिंग रेशियो में उनको बांट दिए जाएंगे. So this is related with the condition when claim is less than the amount of reserve. Now come the next condition. अभी मान लीजिए क्लेम कम था, कोई बात नहीं, पर नेक्स्ट सिचुएशन sometimes the claim may be more than the amount of reserve. हो सकता है कि due to some accident the amount of compensation which is claimed by the worker is more than the amount of reserve which you are having. आपके पास 10,000 का रिजर्व है और क्लेम आ गया 12,000 रुपए का. Claim was of 12,000 rupees. Then in that condition what will happen? Definitely you will be suffering the losses of 2,000 rupees. There will be an additional liability created that is of 2,000 rupees on your part. फर्म के पार्ट पे एक एडिशनल लायबिलिटी बनेगी 2,000 रुपए की. Why? Because 10,000 rupees you are already having a reserve, तो 10,000 तक एडजस्ट हो गया, but still 2,000 rupees is there. So that is a definite loss for the firm. So when there will be the loss, that is the liability will increase. So that now what will happen? अब आप क्या करेंगे? So that loss of rupees 2,000 you have to adjust through the revaluation process. Revaluation is also one of the adjustment we have discussed. That is the increase and the decrease in the amount of liabilities or assets may take place at the time of the reconstitution of the firm. ये आपको पिछले लेक्चर्स में बताया गया वीडियोस में कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट का है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. आप जिस दिन एग्रीमेंट बदलता है उस दिन आप अपनी असेट्स और लायबिलिटी को रीअसेसमेंट रिवैल्यूएशन कर सकते हैं. सो दिस इज द सेम केस हियर बिकॉज देयर वाज अ रिजर्व ऑफ 10,000 आपके पास ऑलरेडी था एंड देयर वाज अ क्लेम ऑफ 12,000 और जो क्लेम आ गया उस दिन 12,000 का आ गया. तो 10,000 यू हैव एडजस्टेड विद दैट. तो क्या हुआ? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो गया आपका कितने रुपए से? 10,000 से. एंड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और जो क्लेम की लायबिलिटी थी तो वो इस कंडीशन में जो क्लेम की लायबिलिटी है वो 12,000 है. सो 10,000 डेबिट एंड 12,000 ऑन क्रेडिट साइड. दैट विल नॉट बी डन because it is known to you that debit and credit should be equal. So where this difference of 2,000 rupee now will be adjusted? So this will be adjusted through revaluation account. Okay, because revaluation is a procedure in which we are recording the increase and decrease of assets and liabilities. So this 2,000 rupees, the claim which is being exceeding, which is the exact liability on the firm now, will be debited by the name of revaluation. So here it will be workman compensation reserve account debit, revaluation account debit to provision for workman compensation claim 10,000, 2,000 and 12,000. So this is how you will be making the adjustment of that reserve against that claim. But now
there is a loss of 2000 rupee because when the liability will increase, जब liability बढ़ेगी, so every partner has to suffer that loss, bear that loss. तो उस कंडीशन में there is a second entry with this, इसके साथ में दूसरी एंट्री भी रहेगी, that is all partners capital oblique current account debit, क्योंकि जो लॉस होता है वो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट होगा, and this loss is taking place due to the revaluation of the liability because there was an increase in liability, so it will be to revaluation account. जो revaluation यहाँ पे हमने डेबिट किया वो सेकंड एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा. तो all partners capital oblique current account debit to revaluation account, that is the loss on revaluation transferred to capital and current account whatever it is in the old ratio. So this will end your concept when there is more claim than your reserve. Claim अगर reserve से ज़्यादा है तो जो amount excess है उसको revaluation account से adjust करेंगे और उतने ही loss को फिर हम partners के account में debit करेंगे. Okay? So this is related with one of the concept of the accounting treatment of reserves and accumulated profits and losses. And in this we have discussed the journal entries related with the transfer of reserve, transfer of losses and expenses, as well as the journal entries related with the workmen compensation reserve treatment or claim against workmen compensation reserve treatment. So there were three concepts here. Claim is equal to the amount of reserve, claim is less than the reserve or more than the reserve. Okay. So what will happen in this case? We have discussed all these general entries in detail. Hope you understood all these concepts of journal entries related with the WCR or workmen compensation reserve. Okay. In the next lecture, we will be discussing about the numerical based on the workmen compensation reserve or transfer of the reserves in the books of account.